उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने स्पोर्ट समिट का आयोजन किया। इस बार का विषय था उत्तर प्रदेश भारत के खेल क्षेत्रों में उभरती ताकत। इस कार्यक्रम में खेल, सरकार और उद्योग जगत से कई जाने माने लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की भारत के खेल जगत से बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। इस समिट की शुरुआत आलोक ध्यानचंद को चेयरमैन फिक्की यूपी स्पोर्ट्स कमेटी अर्जुन अवार्ड विजेता और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी के साथ रचना गोविल को चेयरपर्सन फिक्की यूपी स्पोर्ट्स कमेटी अर्जुन अवार्ड विजेता और भारतीय खेल प्राधिकरण की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के संबोधन से शुरू हुआ। इस समिट की मेजबानी यूपी T20 लीग की काशी रुद्रा टीम ने करी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने भी शिरकत की। Yes, so see, Uttar Pradesh has the biggest sports goods manufacturing sector here. Meerut, we all know, it is the largest producer of sports goods products all over India as well as the globe. But along with that, UP also has a fantastic sporting culture, and we feel that the kind of governance and the kind of infrastructure which we have here, also the kind of talent. So UP can play a very important role in producing high-level athletes. If India is organizing the Commonwealth Games in 2030, then we are also trying to bid for the Olympic, to organize the Olympic on 2036. UP can play a very important role here. So that is the reason why we did this. Of course, PPP model is the crucial thing in developing any kind of infrastructure development across any states. Both the corporates or the private players have to come forward to work with the government to make it happen. So FICCI is going to play a key role in terms of helping this initiative. See, today itself you can see on my back that JK Cement has taken a leading role, to organize this round table here. So, and if you see the way cricket has been developed across the country, and it is mainly the corporates who are playing a key role in these cases. So similarly, we would like to see that the corporates coming and taking onus on promoting the various other sports beyond cricket. To make India a sporting nation, the corporates have to play a major role in this case. डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए और बेहतर बने, और जिससे कि जो प्लेयर्स अपकमिंग खिलाड़ी हैं हमारे बच्चे, वो उन स्पोर्ट्स गुड्स के थ्रू और प्रोफेशनलिज्म के साथ, पहली बात क्यों आज हम उसकी बात नहीं करते कि खेलना है, खाली खेल के साथ हमको अपना एक प्रोफेशनल तरीके से आगे लाइफ को भी बढ़ाना है। और जब प्रोफेशनल तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो मैं भी मानता हूँ इस बात को कि रिज़ल्ट्स उसके बहुत हाई होते चले जाते हैं। जब कंपटीशन बढ़ता है, एक तो खुद का कंपटीशन, दूसरा मॉनेटरी फ़ायदा, तो दोनों चीज़ें ऑल टुगेदर जब मिलती हैं खेल के साथ में, तो वो एक स्पार्क अलग से बनता है, और वो स्पार्क इन बच्चों के लिए निकलेगा, आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एक मंच आज मिला है हमारे बच्चों को भी, और यूपी के हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोगों को, कि किस तरह से प्रोफेशनलिज्म को स्पोर्ट के साथ हम जोड़कर हम देखें, जिसके लिए फिक्की ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि एक चीज़ नई, सब चाहते हैं कि हाँ अच्छा जीवन निकले, अच्छा जीवन व्यतीत हो, साथ में पैसा भी आए, लेकिन टारगेट क्या हो, देश के लिए मेडल। तो मेडल्स के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा आज पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले ओलंपिक जो था एमेच्योर था, ये कोई प्रोफेशनल खेल नहीं सकते थे उसके अंदर। जो एमेच्योर थे वही सिर्फ खेल सकते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको हटाया गया। नहीं, अब हमको इसके अंदर क्वालिटी और जो एक एक्साइटमेंट व्यूअर्स के लिए अच्छा एक सीन पैदा करना है पूरे। तो आज हम सब वही नोट करते हैं कि किस तरह से जब मेडलिस्ट जीतते हैं ओलंपिक्स के अंदर या कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड कप में, तो किस तरह देश का सम्मान झंडे के साथ ऊपर बढ़ता है। तो उस सम्मान को बढ़ाने के लिए आज का ये आयोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चों के अंदर खेल की भावना तो पैदा हो, साथ में ये भी करियर कैसे बने, उसके लिए डिफरेंट हमारे आज सेक्शन भी आए थे, चाहे वो मेडिकल सेक्शन हो, चाहे हमारा
फंडिंग सेक्शन हो, चाहे प्लेइंग, हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, अभी रिसेंटली उपाध्याय जी आए हमारे साथ में, और सुजीत कुमार आए, मेरा आना हुआ, तो रचना गोविल जी यहाँ पर मौजूद थी। तो ये सब चीज़ें इसलिए कि एक बहुत अच्छा, हमको, मुझे भी अच्छा लगा, और मैं इसके लिए इनको फिक्की को खास तौर से सभी को कांग्रेचुलेट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर आपको यूपी तो पूरा फ्रॉम द बिगनिंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी खिलाड़ी को बनने के लिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पीछे सब लोग लगते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोच होगा, सोसाइटी भी होगी, सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इन सबको फैक्टर्स को मिला करके ही हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बिकॉज फाइनली इट शुड बी एथलीट सेंट्रिक। तो अभी जो हम लोग का ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, इट इज़ good. It is for the first time we are having with JK Cement and FICCI. Both of us have come together, और बहुत अच्छा brainstorming session हुआ है इसके ऊपर कि how gradually we can bring up sports in UP. Of course, in the last 10 years मैंने देखा है कि बहुत grow किया है UP का sports. Lot of international athletes have come up. हमारे हॉकी में ही इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, यूपी से करीबन 5 या 6 बच्चे हैं जो जूनियर इंडिया टीम में हैं, करीबन 3 से 4 बच्चे हैं जो सीनियर टीम में है इंडिया की। तो बहुत बड़ी बात है, एक टीम में 25% 20% का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही अगर आप देखें तो एथलेटिक्स में भी हमारे बहुत वर्ल्ड क्लास एथलीट सब हो गए हैं। पारुल चौधरी है, प्रियंका गोस्वामी है, अनुरानी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो जैवलिन में उसका फाइनल में आई थी, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। पैरा में भी हमारे एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे श्रेजेश त्रिवेदी है, तो वो 100-200 में पैरा गेम्स में, एशियन गेम्स में ही वन अ मेडल। तो ऐसे अभी नाउ दे आर ग्रोइंग। पर अब इससे अब ये है कि हम नेक्स्ट स्टेप आगे हमें क्या करना है, हाउ वी टेक अप, we'll submit the report to the government and to various sectors all put together. And even another thing is कि UPB is also trying to have PPP mode पे, they are having the stadium, आपका इकाना स्टेडियम PPP मोड पे चल रहा है। तो ऐसे अगर और भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स अगर आ जाएंगे इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि UP will certainly do wonders in sports. तो अभी तक इन द पास्ट जो यूपी ने काफ़ी सारे, आई मीन वी आर हैविंग क्रिकेट मैचेस, देन सैयद मोदी जैसे बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो रेगुलर फीचर है, वी आर हैविंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, देन लॉट ऑफ इंटरनेशनल एथलेटिक्स इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस, प्लस द नेशनल लेवल चैम्पियनशिप्स आर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। तो नाउ दैट, क्योंकि स्पोर्ट्स अगेन एज आई से इट्स जस्ट नॉट एन एथलीट पार्टिसिपेटिंग, बट कितना एक्सेसिबिलिटी भी है। तो विद लॉट ऑफ डेवलपमेंट एज फार एज द ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न एंड द हाईवेज डेवलपिंग एंड ऑल, थिंग्स आर बिकमिंग मोर एक्सेसिबल। तो उसकी वजह से मुझे अभी सिगरा स्टेडियम में बनारस में जो बना है, तो विद ऑल दिस डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस, आई एम श्योर we'll have more matches and more tournaments going on in UP, and UP will become a more happening place. Sporting hub. Yeah. Thank you so much. Yeah. Firstly, what on today's summit? I mean, yeah, it was a great experience in terms of, if you'll ask me, getting to know people from different sports arena and getting to know how the things are made there in UP specifically. So I come from a sports medicine background, so if you'll ask me, getting to know about how the sports is being played and what are the lacuna which we have presently in our state of Uttar Pradesh is something good to understand, and these things will actually aid not only in terms of the sports but also the sports science and medicine as such. How should the young athletes and parents approach injury prevention? Okay, so injury prevention is actually, if you see, it starts with a very early age, and for injury prevention it's utmost important that we should know our physical capacity. So unless and until you are not aware of the physical capacity, you might overperform or you might underperform. So ideally is like
one is something which we should try to get an expertise help, where you can actually get the screening of your physical activities and get to know your physiological parameter and physical parameter, which aids you in further preventing the injury. Apart from there, it is sport specific also, as we say, like the proper warm up and cool down and the skill specific training is at most important for preventing the injuries as such. What according to you is the basic medical infrastructure that the schools and academies should have? Yeah, so medical infrastructure, if you'll ask me, it's something, at least a state should have a nodal center from where actually they can seek help, because UP being a very larger state, it might not be possible for all the academies or all the hospital to have a sports medicine or science setup. So, but definitely if it is there, it's always ideal, but at least they should have one nodal center where all the injury prospect or the injury prevention or the high performance management can be done for the athletes, and in fact it can be a boon for the budding athletes who can be injury free and can do a lot of good things in the sports as such. So sports and conditioning aspect, if you say for the any athletes and all, the ideal time is to something which we always say, like early you just try to play all the sports, and gradually as you are turning around 12 to 13 year of age, where actually we can choose for a specific sports, and that is the ideal time where one should start focusing on the strength and conditioning aspect, and he should start working on it, so that at least he is aware of his muscles, bone, joints and other aspect, and can do the resistance training, periodize the schedule and can work it out in a way which is very much suitable for his or her sports as such. So it's a very good initiative from FICCI UP, because not only like how we are like to progress sport at the national, state and the district level, at the participation level, the industry also needs to come in not only at the national level but at the state and even down to the local level. So I think this is a good initiative from the state level at least, to get the industry together, at least in UP. UP itself is such a big state, almost like another country. So it will be excellent for UP to then take the lead as an industry body. So the biggest challenge or litigation in sports is election and selection. Now with the new Sports Act coming into picture, there will be a sports tribunal, there will be a sports board and there will be a sports election. So I think a lot of these things will get cleared, and with a specialized tribunal, hopefully the disputes are resolved quickly and easily and fast, and hopefully we are able to concentrate on sports rather than all the disputes around it. I think to improve the structure and to protect the athlete and stakeholders, we need more athletes in the system. And this new Sports Act is now getting in the athletes not only at the national federation but at the state federation level as well, and making it mandatory on sports bodies to have them, also making it mandatory to have player bodies and have an election of the player bodies. So now when the athletes together come into the role of administration, there will be more participation and more athletes will then have, as we say, as an industry body, they will have alternate career paths in sports. And this is what I think also needs to be propagated besides actually sports participation.